हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं शुरुआत करूंगी सबके साथ, हम सब एक साथ बोलेंगे हर हर महादेव। तो इट वाज अमेजिंग, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि एक कोरियन, हमारी दुनिया, हमारी पूरी जेंजी कोरियन पॉप के पॉप के पीछे पागल हो रही है, और हमारे पास साक्षात एक कोरियन है जो हमारे शिव जी के लिए शिव भक्त निकले, हमारे शिव जी के लिए इतना प्यारा, इतना इतना अमेजिंग, मतलब ब्रेथ टेकिंग सॉन्ग जो है बना दिया है। और तांडव, खुद डांस कर रहे हैं, खुद तांडव कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये गलती से कोरिया में पैदा हो गया, ये पीछे से आत्मा कहीं हमारे बनारस की या ऋषिकेश की कहीं की आत्मा है ये। सो इट वाज टू गुड मैन, टू गुड लवली। तो प्लीज देखिए, प्लीज डू वॉच इट, सबको बहुत पसंद आएगा। मैं तो बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा है, तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। एंड ऑल्सो आई वांट टू टॉक टू द प्रोड्यूसर. So he's Abhay Purpani, and he's the owner of a lounge in Malad called Glass House. Glass House. And sometimes हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ चिल करते हैं, और अचानक से I want to ask him now, मतलब ये कहाँ से थॉट आया अचानक से, from being a lounge owner to producer, song producer, वो भी सीधा महादेव. Like I said, you said we are very much inspired with Korean cultures, Indians, we Yeah. Indians. So when I got the concept of this song from Rachna, that Korean singer, is gonna sing a song on Shiva in Hindi and Sanskrit, sorry, Sanskrit and English. Yeah. So I was like, wow, this is what got inspired me to be a producer of this song. Thank you, Aura, for this wonderful song. Thank you very much. We go to Glass House. Yeah, we We go go to to Glass Glass House. House. We go to Glass House. No party. Actually, launch should be there only. The launch Definitely, event should be You there. went to go Glass House. You have to go Yes, Glass yes, House. yes, Yeah, she yes. comes to Glass Where? House. Whenever you come. Whenever you come. Tonight. No, no. Come, tonight. 14 Glass House. आप लोग दो. All right. Thank you so much. हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. Right. So, I mean, to give you a prelude to what the song is about, I'm sure everyone has felt this at some point in their lives that, because of the cyclical nature of life, you sort of get overwhelmed by different thoughts that, bother you, or the material requirement that this world has from us as humans, and you kind of get lost in your daily life, and you don't sort of stop to think, okay, what is my ultimate purpose, or what is beyond any of the things that sort of make us human on a daily basis. And the song is sort of about that. It's about taking a moment to yourself, sitting down and exploring sort of your inner mind and what sort of brings spirituality into your life. And in this particular song, Shiva guides Aura through a meditative trance where he basically lives 100 different lifetimes, and he gets an understanding of the world from a God's point of view. So he's able to finally see beyond the human emotions that bind us to this world and the material nature of this world, and sort of embrace that and attain an ultimate sense of nirvana. And yeah, I mean, that's what the song is about. And what was the reason for you to take up USP? You thought this song has. Well, like I said, it's very interesting because we tend to see the world from a very one-dimensional point of view, and we sort of forget to see that there's more to this world and there's more to life than just being human. So the fact that we could explore him living 100 different lifetimes, battling all the different emotions of grief, anger, confusion, was sort of the USP for us on how we could sort of depict that visually without actually showing a clear passage of time. And yeah, that's the USP for us. Would you like to add something? I think what everyone will see eventually is the effort and the amount of intensity Aura will bring into this song. He's put in so much time, so much effort, all to make this song as viable for everyone to see and not to disrespect anyone's interest in this. He has, in our opinion, and
soon, and hopefully, in your opinion, also lived up to everyone's expectations. And what you will see is a dance performance, what you will see is emotions, what you will see is faith come to life with this song and through Aura. That's what. Thank you so much. Thank you. Excited to see it. It is something very new and unique, and I can't wait because what I've heard about his performance, that it's quite good. So I'm looking forward to it. Exactly. You have a series also. Yes, his series is coming, Yes. which is Talash. Talash on Netflix coming soon in a few months. So I'm eagerly waiting for that. Even we are eagerly waiting for that. And thoda sa about this song is that आजकल everyone is going crazy about this whole K-pop culture आ गया है इंडिया में, और इतने सारे लोग पागल है, इतने सारे फैंस हैं, अभी आपने देखे इतने सारे ग्रुप्स आए हैं यहाँ पर. बट इट इज़ सो नाइस टू सी Aura represent our culture there and put it on an international platform and promote शिवा इन कोरिया. सो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पॉइंट था एंड आई लव्ड इट. और टीजर तो आप देख लेंगे एंड गाना इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक. Thank you. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. Abhi, what inspired you to produce Aura song? See, hi. Thank you. First of all, see, Lord Shiva is not limited to any culture or any country. So nowadays we Indians are very inspired with Korean music, Korean dance, Korean cinema. So when I heard this concept of the song from Parul, that Aura, Korean singer, is gonna sing a song on Lord Shiva in Hindi, in Sanskrit and in English, that was a wow moment for me. That thing inspired me to be a part of this song as a producer. आपने जब गाना सुना, what was your reaction? I तो loved it. मुझे तो अच्छा लगा बहुत गाना. I'm just waiting कि कब इसका exact वीडियो आ जाए. I'm just waiting for this. Thank you. Thank you. Just do pictures. Song जो Aura ने गाया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? वैसे तो मैं ओरा को बहुत टाइम से जान रहा हूँ. हमारा एक के डरमा करके प्रोडक्ट आया, उसमें ओरा ने हमारी बहुत हेल्प की है. और ओरा दिखता है कोरियन, लेकिन उसका दिल एकदम हिंदुस्तानी जैसा है. और उसका म्यूज़िक में आप देखते रहेंगे कि हिंदुस्तान का कल्चर के बारे में ही रहता है, वो कल्चर को फील करता है. तो मैं ओरा को शिवा शिवम जो सॉन्ग उसने अभी आज वीडियो जो इनका हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ. और वो हमारे फंक्शन में आया था, उसने वो टाइम पे शिव तांडव गाया था. तो वहाँ पे 30,000 के प्लस हमारा कम्युनिटी की पब्लिक थी. उन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया, और उसका हिंदुस्तान कल्चर के हिसाब से वो गाना, तो मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ. थैंक यू. Aura's Shiv Tandava, which he sung so beautifully, being a Korean artist and singing in our, blending in our culture and heritage is what it is. What do you have to say? I just would like to wish them all the best for this venture, and looking forward to hearing it. So being a singer, I'm sure it's always encouraging, when you find someone. What do you have to say about that? All I can do is wish them all the best. Yes, it's always nice to keep doing new ventures and new releases, and yes, wishing them all the best. As always, Aura being a Korean and really sung Shiv Tandava, Shivratri just around the corner. What do you have to say about this effort of this? इट्स इनक्रेडिबल एक्चुअली. एक तो खुद कोरियन लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ होती है, एंड एक कोरियन बंदे ने शिव तांडव को गाया है. सो इट्स रियली इनक्रेडिबल, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर दिस शिव तांडव. एंड ही इज़ मल्टी टैलेंटेड. आई थिंक ही इज़ वेरी नाइस. सो आई थिंक कोरिया के अंदर बहुत टैलेंट है, एंड आई एम ग्लैड कि हमारे इंडिया में वो टैलेंट आया है. सो इट्स रियली गुड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, Aura, everyone. Thank you so much. Thank you. Shiv Tandava गाना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप खुद इतनी स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस करते हैं. नमस्कार सभी को. हर हर महादेव, जय श्री महाकाल. आज क्या है? शिव अर्धनारीश्वर जो होता है, भगवान ने हम लोग को बनाया. यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना सारा लोगों में हम लोग को भी याद किया. जो होना चाहिए था सबके ध्यान में नहीं रहता है. जो सब्जेक्ट का गाना है आज, उसमें हम लोग का ही है. तो आप सब ने याद किया, मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. मुझे एक बात सबसे अच्छा लगा
हम लोग जो इंडिया की जो कल्चर बाहर देश का लोग अपना लिया। मैं चाहती हूँ जो हम लोग इंडियन हैं उनको भी अपनाना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं भारत की सारी किन्नर माँ की तरफ से। थैंक यू सर। हर हर महादेव। To see you, happy Shivratri. That Yeah. we are here for this Shiv Tandav song, which a Korean has sung, and you are the chief guest here. How does it feel to be, from the same fraternity to see, foreigners, put it like that, to come in India and promote its culture, heritage, its rituals, its spirituality, everything? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर्स को और हमारी इंडियन जो जिसको कहते हैं ना जो योगिक नॉलेज है और जो हमारा इतना बड़ा इतिहास है वो इंस्पायर कर रहा है सिंगर्स और परफॉर्मर्स को जो कोरिया से हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है और मुझे लगता है आने वाले पलों में आने वाले जितने भी वर्ष अभी आने वाले हैं उसमें इंडियन एथॉस और इंडियन कल्चर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हर तरफ आज सितार वादक को लाखों लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऋषभ शर्मा जी हैं और ऐसे बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जो सेंटर में आ रहे हैं। मेडिटेशन, योगा और हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऑरा ने ये शिव तांडव आप लोगों के लिए अपने स्टाइल में पेश करने की कोशिश की है और इस चीज़ की हमारे म्यूज़िकल लेगेसी को भी बड़ी खुशी है कि इन लोग हमारे इस कल्चर को, हमारे इस म्यूज़िक को अडाप्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ यही फ्यूचर है। और आज ह्यूमन वेलनेस जो होती है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इंडियन कल्चर का है। जो ह्यूमन लाइफ को चेंज करने के लिए हमारा जो इतनी बड़ी हमारी जो नॉलेज है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की, योगा की, हमारे कल्चर की, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाले पूरे विश्व पे। एंड संगीत इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आप जानते हैं सारे ब्रह्मांड के अंदर ये ऑलरेडी सारे साइंटिस्ट और सारी दुनिया ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे जो क्रिएशन है पूरे ब्रह्मांड, हमारे पूरे यूनिवर्स का जो मेन साउंड है वो ओम है। सो टुडे इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी एज एन इंडियन एंड ऑल्सो एज अ म्यूजिशियन that international musicians like Aura are taking the step towards making Indian classical music a part of their musical journey. Thank you very much. Thank you, everyone. Aura, Double J is here. Would you like to sing a line or say something? So this, what's it? Small sound. Sing. Tetapi kalau jalan pelapa kita seleh kali belam hitam hujan gedung kembali kau teman nina dawata malbayam cara tandabam tanutuna shivam. Har Har Mahadev. Well done. Yes. Journey about Shiva Shivam. How does this journey started and what made you to sing this Shiva Shivam? And how it was difficult or easy to sing this song? First, 그 Sanskrit is very difficult, and I prepare time 1 year. So every day meditation, also every day learning. Now also today also learning. So many practice, but very happy. Could you tell me about your entire look of today's song launch? You are looking very nice in Thank you. tilak and all. How did you plan? I'm so very grateful, and then because of Sir coming also, I'm so very grateful, thankful God also. Now just I want to this know. Now I'm learning India culture also, India music also. Now started. So until now today landed in India 3 years today. So after also look forward. Thank you so Tell much. me about your video which you are launching today. I'm so very excited and I'm so very happy because we are together. Good luck to Oro. Good luck, everybody. And wish him all the luck so that. God bless you. Thank you. Thank you. Come. Aura today sung Shiv Tandav on the occasion of Shivratri and releasing his song. What do you have to say? First of all, congratulations. I think Jai Mahakal, Jai Shivji, I listen to it daily. So this is something that I don't miss this.
I have my fast version and the slow version. And Shiv Stotram obviously is a hymn which talks about surrender. So I think that's something which is the essence, where you let go of your ego, you let go of your false visions, and look at total surrender to God. So I really follow it with passion, and I'm very happy that you sang this, and this is something I look forward to. So congratulations on this. Thank you, This sir. is really special, and when Parul mentioned about this one, I didn't want to miss this. So thank you. Thank you so much. Do you want me to see in particular camera? All right. Firstly, हर हर महादेव सभी को. I hope आप सभी अच्छे होंगे. And honestly, when I have to talk about the song, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ शिव जी की, and I'm very happy to know this amalgamation of Korea and the Indian culture that we have here in India, where कोरिया के एक आर्टिस्ट ने पहली बार यहाँ पे आके हमारे कल्चर में इमर्स किया है. So I'm very happy ये collaboration जो हुआ, and I'm very happy with the fact that my friend Abhay is a part of this beautiful song, and he made me come here and watch the teaser. And honestly, I just can't wait to see the whole song, because it just gave me goosebumps while watching it, because when I saw and the whole thing, the way it has shot, everything just made me feel so excited about it. So I just can't wait to see the entire song, and much love to Aura and the entire team of this song. Har Har Mahadev. Thank you so much. Thank you.